गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब द इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो फर्टिलाइजेशन के साथ ही खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद के जो इवेंट्स है वो कहलाते हैं पोस्ट सेक्सुअल इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इनफैक्ट दो तरह के इवेंट्स होते हैं बच्चों। एक तो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट, a diploid and dependent sporophytic plant body. Why dependent? Because it remains attached or gametophyte. ठीक है, एक तो ये इवेंट होगा। सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ tetrasporophyte. One more diploid plant body, a sporophyte which is called a tetrasporophyte and it is a free living sporophyte. ठीक है, तो दो इवेंट्स रहेंगे। आज हम सिर्फ कार्पोस्पोरोफाइट को डील करेंगे। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्यों नहीं किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बच्चों? तो इनफैक्ट इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which some special type of propagules are formed, and generally these propagules are in the form of spores. ये बच्चों ध्यान से सुनना है। और some special propagules are formed, but these propagules never fuse. Okay, if they fuse, that means they are gametes, and it becomes sexual type of reproduction. Okay, but if the special propagules in the form of spores are produced, but these are not fusing, that means they are asexual spores. ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से इनफैक्ट these are a sort of asexual reproduction. ठीक है, क्योंकि जो पहला है हमारा आज का जो लेक्चर डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट। तो कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनाता है बच्चों। ठीक है, एंड दोस कार्पोस्पोर्स आर asexual spores. ठीक है, these are reproductive bodies. Okay, because diploid carpospores will germinate and they will give rise to independently living diploid plant body called a tetrasporophyte. ठीक है, फिर बात आती है कि टेट्रास्पोरोफाइट का क्या काम होता है। टेट्रास्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड स्पोर्स कॉल्ड टेट्रास्पोर्स। ठीक है, and those tetraspores will germinate and they will give rise to new gametophytic plant body, and in this manner the life cycle in a Polysiphonia in a triphasic manner it continues. ठीक है बच्चों, तो ये सब समझ आ गया है ना, ये समझ आ गया है आप लोगों को अच्छे से। तो इसलिए जनरली जो बुक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से दिखाया नहीं गया है, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आता बच्चों। बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कार्पोस्पोर्स इन कार्पोस्पोरोफाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोर्स इन टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। जनरली मैंने आज तक नहीं देखा बच्चों। ठीक है, मुझे लगभग 14-15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने किसी भी साल ऐसा कोई प्रश्न पत्र में इस तरह का प्रश्न नहीं देखा, डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। लेकिन फिर भी जानकारी होता है, जानकारी रखना जरूरी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से आ सकता है, डिस्कस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन पॉलीसाइफोनिया इन डिटेल। क्वेश्चन लंबा आएगा ये, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा। या ये पूछा जा सकता है, डिस्कस पोस्ट सेक्सुअल इवेंट्स इन पॉलीसाइफोनिया इन डिटेल। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, explain the development of carposporophyte and tetrasporophyte in Polysiphonia in detail. ठीक है, but today we are going to deal with the development of carposporophyte, the formation of carpospores, and finally the germination of carpospores to produce a tetrasporophyte. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ टेट्रास्पोरोफाइट वी विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है,
क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल जैसा टॉपिक है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं इंटेंशनली स्लोली चल रहा हूँ आज के दिन, ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो पढ़ लेता हूँ, है ना, मुझे तो मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं इंटेंशनली स्लो चल रहा हूँ बच्चों आज के दिन, ठीक है। ओके, so here we are going to deal with the development of a carposporophyte. Now one question arises, from where this diploid carposporophyte develops from this cell which contains a diploid nucleus, and I told you yesterday that this diploid nucleus is responsible for a formation of a new plant body called carposporophyte, ठीक है, only nucleus बच्चों, because the body of carpogonium is not taking place in the formation of a carposporophyte. So these are different events of a formation of a carposporophyte, one by one A B C D करके लिखा हुआ है, like this, like this, like this. Here in this slide, मुझे मालूम है आप लोगों को स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है बच्चों, लेकिन मैंने इंटेंशनली ये भी दिखाया है। यहां पर 8 इमेजेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इन इमेजेस को मैंने आगे एनलार्ज किया है बच्चों, ठीक है, आप ध्यान से सुनना है, ये नहीं ड्रा करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैंने इमेजेस में कुछ एडिटिंग किया है, ठीक है, एक एक करके मैं इमेजेस आपको दिखाऊंगा, और मैंने 9 इमेजेस बनाए हैं, ठीक है, उनको ड्रा करना है, ठीक है, पहले मैं ड्रा करूंगा फिर लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक इसके जर्नी का एक हल्का सा एक कंक्लूसिव पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट एक बार मैं समझा देना जरूरी समझता हूँ। कौन सा जर्नी है बच्चों, ये जर्नी है, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और लास्ट में हमारा कार्पोस्पोरोफाइट बन गया है, ठीक है। और कार्पोस्पोरोफाइट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नॉट कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। कार्पोस्पोरोफाइट जो इसके अंदर का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज कार्पोस्पोरोफाइट। इसमें भी मोरोवर जो ये प्लेसेंटल एलिमेंट नजर आ रहा है, ये भी कार्पोस्पोरोफाइट का हिस्सा नहीं देता। अब ध्यान से सुनना है बच्चों, क्योंकि लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम इसी स्टेज पे पहुंचेंगे, ठीक है। जो कार्पोस्पोरोफाइट असल में बनता किस चीज से बच्चों, एक होता हमारे पास गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, में एब्रिविएशन में लिखूंगा गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, ये बनाता है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, ठीक है। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के ऊपर हमारा कार्पोस्पोरेंजियम बनता है, कार्पोस्पोरेंजियम, और कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर या हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ कार्पोस्पोरेंजियम दैट बिकम्स अ लार्ज डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, गोनिमोब्लास्ट filaments, carposporangium and carpospores, these constitute carposporophyte, which are enclosed inside a protective covering called pericarp, formed by the divisions in the adjacent pericentral cells. जो सपोर्टिंग सेल के चारों तरफ में जो पेरिसेंट्रल सेल्स होते हैं वो डिवाइड रीडिवाइड करते हैं, एंड दे मेक अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड दिस डेवलपिंग डेलिकेट स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पोस्पोरोफाइट, एंड द वॉल which is called pericarp wall along with the carposporophyte it becomes cystocarp। मैं लास्ट में एक इमेज दिखाऊंगा, एक ओरिजिनल इमेज है ना, तो उसको देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा। हम लोग जब बाहर से देखेंगे हमको असल में कार्पोस्पोरोफाइट नजर नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि वो वॉल के अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल लेयर के अंदर रहते हैं, और बाहर से देखने पर हमको सिंपल एक सिस्टोकार्प नजर आता है। कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक्चुअल स्थिति ये है, अंदर का स्ट्रक्चर है हमारा कार्पोस्पोरोफाइट which is formed by, one more time I am repeating it, gonimoblast initial, gonimoblast filaments, carposporangium and carpospores, ठीक है। and carposporophyte along with the wall it makes cystocarp, here it is,
ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी वन बाय वन। मैंने इमेजेस थोड़ा बड़े बड़ा करके दिखाया, मुझे मालूम है बच्चों आप लोगों को फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ नजर नहीं आ रहा है या तो थोड़ा अस्पष्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके इवेंट लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रा, ठीक है। और ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारा फर्टिलाइजेशन के टाइम में रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो इस रूप तक डेवलप रहता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके एक बार फिर से रिपीट करता रहूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पर्मेशियम। असल में ये सिर्फ मैं जानबूझ के दिखाने के लिए किया बच्चों, आप लोगों ने ड्रा नहीं करना इस हिस्से को, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्मेशिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्पर्मेशियम का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों कार्पोगोनियम के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बचेगा क्या है स्पर्मेशिया का? ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्मेशिया है, मेल गेमीट है, वो सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट पीस होता है। तो साइटोप्लाज्म और मेल न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो कभी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता बच्चों, वो तुरंत पेरिश हो जाता है। इसलिए आप लोग इस डायग्राम को, इस हिस्से को ड्रा नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया था आपको ना। ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है, यू नीड नॉट टू ड्रा दिस डायग्राम। अदरवाइज नाउ दिस स्ट्रक्चर बिकम्स दिस इज आवर सपोर्टिंग सेल, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। दिस इज 3/4 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट एट द टॉप ऑफ व्हिच देयर इज अ वीक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड कार्पोगोनियम, ठीक है, हैविंग अ वीक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइकोगाइनियम, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं बच्चों, ये आज के इवेंट में कोई शामिल नहीं है, एक बार जस्ट रिमेमोराइज कराने के लिए नेक्स्ट फैक्ट के रूप में, ठीक है। और अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है बच्चों, कार्पोगोनियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो रहेगा एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। और एक और इवेंट क्या होता है फर्टिलाइजेशन के समय तक, एट अ शॉर्ट लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इज फॉर्म्ड एंड अ बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल इज देयर, ठीक है। तो हमारा आज का डेवलपमेंट इस डायग्राम से आगे को प्रोसीड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट, दैट दिस टू सेल्ड, अच्छा एक और बात है बच्चों, मैं फिलहाल ये डायग्राम के बेस पर आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो लिखने वाला पोर्शन है, ठीक है, लिखने वाला पोर्शन है वो मैं एक एक करके रीड करता रहूंगा, ठीक है। So what happens? This lateral sterile filament, it cuts off lateral segments, more lateral segments, and it becomes a 4 to 10 celled lateral sterile filament, which is nutritive in function, and the basal sterile filament initial cuts off one more segment, and it becomes a two-celled basal sterile filament, and both of these 4 to 10 celled lateral sterile filament and 2 celled basal sterile filament, these are nutritive in function, ठीक है। उसके बाद एक और इवेंट होता है, that the supporting cell it cuts off a segment towards upper side and that cell becomes an auxiliary cell, ठीक है। इसके लिए मैंने दूसरा डायग्राम ये बनाया हुआ है, that lateral sterile filament becomes a 4 to 10 celled lateral sterile filament, and basal sterile filament initial it cuts off one more segment and it becomes two celled basal sterile filament. Both of these are nutritive in function. Next what happens, that supporting cell it cuts off one more segment toward upper side, that becomes our auxiliary cell. Now next event what happens, अब अगला इवेंट देखना बच्चों, मैं नेक्स्ट की बता देता हूं। नेक्स्ट इवेंट टेक्स प्लेस इन कार्पोगोनियम, द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, द न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कार्पोगोनियम, it divides mitotically into two, ठीक है। In the meantime what happens, the कार्पोगोनियल filament bends in such a way
that a carpogonium, the terminal carpogonium comes in physical contact with auxiliary cell. As a result, the wall of contact between auxiliary cell and carpogonium, it dissolves, and the freshly formed one of the diploid nucleus migrates into auxiliary cell. ठीक है? And the original haploid nucleus of auxiliary cell, it degenerates, so that now the auxiliary cell contains a diploid nucleus only, which has recently transferred from carpogonium by establishment of a tubular connection with auxiliary cell. How? Like this. ठीक है? कार्पोगोनियम में माइटोसिस होता है. माइटोसिस का रिजल्ट क्या रहता है बच्चों? ठीक है, क्या रहता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस डिप्लॉइड ही रहेगा. ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है. So one of the diploid nucleus migrates into auxiliary cell, and its original nucleus degenerates, so that the carpogonium now contains only a diploid nucleus. ठीक है बच्चों? So this is the next image. This is auxiliary cell. It now contains only one diploid nucleus, which has recently transferred from carpogonium. ठीक है? Now next what happens? This auxiliary cell cuts off one more segment towards upper side, and that is called the goniumoblast initial. ठीक है? Like this. This is our supporting cell. This is our auxiliary cell. The auxiliary cell cuts off one more segment towards upper side. It is called goniumoblast. In the meantime, actually, what happens, bachcho? The diploid nucleus of auxiliary cell, it divides once mitotically. One of the nucleus remains in auxiliary cell, and one nucleus shifts to goniumoblast initial. ठीक है? And immediately after the formation of goniumoblast initial, a septum is laid down at the base of goniumoblast initial, so that this terminal goniumoblast initial gets delimited from rest of the cells. ठीक है? This is auxiliary cell, this is supporting cell, this is carpogonial filament, this is lateral sterile filament, and this is a basal sterile filament. ठीक है? इनसे कट ऑफ हो जाता है by formation of a septum at the base of this diploid goniumoblast initial. याद रखना बच्चों, और diploid कैसे बना? Because it has been formed by division in auxiliary cell, which contains a diploid nucleus. ठीक है बच्चों? Now next what happens? Immediately after the formation of a septum at the base of goniumoblast initial, which delimits it from rest of the cells or rest of the mass, all other cells, including auxiliary cell, supporting cell, carpogonial filament, lateral sterile filament, and basal sterile filament, these all fuse up. ये सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं. Why? Because it now provides nourishment to the developing carposporophyte. ठीक है? Why? Because this goniumoblast initial is the structure which is responsible for formation of carposporophyte. Or in other words, we can say that carposporophyte is formed by goniumoblast initial. This is it, my dear students. Like this. Immediately after the formation of septum, all other cells, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, auxiliary cell, supporting cell, carpogonial filament, lateral sterile filament, and basal sterile filament, they all fuse up and make a placental mass which is nutritive in function. Now next event what happens? Finally
दिस गोलिमोब्लास्ट इनिशियल में ही आगे के इवेंट्स होंगे बच्चों. This golemoblast initial gives or cuts off or gives rise to many short few-celled filaments called golemoblast filaments, and these are 2 to 3 celled or 2 or 3 celled generally. ठीक है? And the terminal cell of these golemoblast initials golemoblast filaments will become carposporangium like this. When one more thing, when this golemoblast initial, it gives rise to many golemoblast filaments. Its original structure distorts somehow. ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट इमेज में भी तो आप लोग बोलोगे कि सर गोलिमोब्लास्ट इनिशियल आपने कहां भेज दिया है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट जैसा हो जाता है. ठीक है, सो we can write like this, somehow like this. ठीक है, हाँ, so this is golemoblast initial which gives rise to many few celled filaments called golemoblast filaments. I have to write here. I will write here. In fact, ठीक है, golemoblast filaments. This is golemoblast filament, and the upper cell or the terminal cell of golemoblast filaments enlarge. ठीक है, enlarges and it becomes a carposporangium. And finally, what happens? That the protoplast of this large terminally situated, terminally located carposporangium, it differentiates into a large diploid spore called carpospore. ठीक है बच्चों, in the meantime what happens, the cells, the pericentral cells which are surrounding, ठीक है, ये दोनों इवेंट्स साथ साथ में चलते रहते हैं असल में बच्चों. ठीक है, the pericentral cells, they keep on growing and they make a protective structure around this developing carposporophyte. ठीक है, in such a way that there is only a terminal ostiole present. एक टर्मिनल ओस्टियोल ही प्रेजेंट रहता है, बाकी पूरा का पूरा हिस्से में ये कार्पोस्पोरोफाइट को ढक लेता है. ठीक है बच्चों, और फाइनली जब कार्पोस्पोर बनेगा, that liberates through this terminal ostiole and that settles on substratum and germinates. Okay, so this is the final diagram you have to draw. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फिर एक और बात बता देता हूं बच्चों. ठीक है, एक बार फिर से जो मैंने शुरू में बताया था. नाउ द स्ट्रक्चर्स in the form of golemoblast initial, golemoblast filaments, carposporangia and the carpospores. These structures constitute carposporophyte, ठीक है, which are enclosed inside a protective sheet formed by the vegetative pericentral cells, and along with the wall, the carposporophyte, it makes cystocarp, and cystocarp looks somewhat like this. These are the original images. ये cystocarp है बच्चों. ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है, किसी अच्छे आदमी ने इंटरनेट में अपलोड किया हुआ है. ठीक है, दिस इज अ cystocarp, और अंदर आपको कुछ फेंट जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ है ना, दैट इज कार्पोस्पोरोफाइट. नाउ इन नेक्स्ट diagram I am showing you next image. This is pericarp, which is formed by the pericentral cells. This is carposporangium. ठीक है, कार्पोस्पोरेंजियम बनता कहां है बच्चों? गोलेमोब्लास्ट फिलामेंट के ऊपर. गोलेमोब्लास्ट फिलामेंट अपने आप में पूरा नहीं नजर आ रहा है यहां पर. ठीक है, लेकिन कार्पोस्पोरेंजियम हमको नजर आ रहा है, और हमको मालूम है कार्पोस्पोरेंजियम इज a short few-celled filament which is formed on carpogonial, that is golemoblast filament,
sorry, golumoblast filament is a fused-celled structure which is formed on golumoblast initial. ठीक है, and the terminal cell of golumoblast filament it becomes carposporangium. So this is it बच्चों. And finally, the carpospores they liberate through the terminal ostiole of a pericard of the or the cystocard. From here, the freshly formed diploid carpospore it liberates. ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ बच्चों. आपको ये इमेज है, एक ओरिजिनल इमेज है. अगर आप लोग ध्यान दोगे बच्चों इस जगह पे like this here you can see a large carpospore liberating. Okay, तो जो बाकी के इवेंट्स है बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ. ठीक है, देखो ये समय शायद होने वाला है बच्चों, 2-3 मिनट बचा.